Hello, welcome to all the students. In the last video we have studied about the thallophytes, that is algae, and classification of algae. Today we shall start the next topic, that is bryophytes. It is also a cryptogam, means spore bearing plants. Next one, about bryophytes, fossil records indicate that bryophytes evolved on the earth about 390 to 430 million years ago. मीन्स ये दुनिया में लगभग 390 से 430 मिलियन साल पहले आया. मीन्स दैट यू कैन से दैट during the in the Silurian periods of पैलियोजॉइक यानी पैलियोजॉइक काल के साइलेंट पीरियड्स में लगभग जो आज से लगभग 390 से 430 साल पहले का समय होता है, इस बीच में इट केम ऑन द अर्थ. नेक्स्ट वन, तो दैट इज अबाउट हाउ इट एग्जिस्ट, हाउ इट कम्स टू द अर्थ, when it came on the earth. Next one, a study of bryophytes is called bryology, a study of. Next one, father of bryology is हेडविग. सो ये कुछ इसके इतिहास है, यानी ये लगभग 390 से 430 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पे आया है हमने, यानी पैलियोजॉइक काल में, और इसके स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं. एंड द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज कॉल्ड इज नोन एज हेडविग. हेडविग को इन्हें फादर. अच्छा, नाउ अबाउट इट features. In this, root, stem, leaves like organs are found. इसके अंदर का आता है रूट, स्टेम, लीव्स लाइक ऑर्गन्स पाए जाते हैं. इसका मतलब हुआ कि मीन्स ट्रू लीव, स्टेम या रूट एब्सेंट. इसमें कहा था, इसका मतलब हुआ कि ट्रू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स आर एब्सेंट. नेक्स्ट वन, द मेन फीचर इज दैट नो vascular system is found. इसके अंदर vascular system नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा जमीन पर फैला हुआ होता है, समझे, या मैक्सिमम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होती है, समझे. सेकंड,
it is found in moist and shady places. ये ज्यादा छायादार हम जो है और नमी वाले स्थानों पे पाया जाता है। मॉइस्ट और सैडी यानी जहाँ हल्का पानी हो या ए फिल्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, बिकॉज फिल्म ऑफ वाटर या वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। अच्छा, सो इट इज फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। We have studied that it is found on moist and shady places. It is found on moist and shady places. And one thing, it grow on soil, but water is essential for its sexual reproduction। होता है ये मिट्टी पे तो उगते हैं समझे, लेकिन पानी इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसलिए इसको हम एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, बिकॉज वाटर फाउंड इन द सॉइल एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज फाउंड in both prostate and erect system। कुछ जमीन पर फैला भी होता है ऐसा, और कुछ ये ऊपर भी होता है समझे। तो दोनों तरह के इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं, जो प्रोस्टेट भी होते हैं समझे, और ये जमीन पर फैले हुए भी होते हैं। नेक्स्ट वन, द थैलस इज प्रोवाइडेड विथ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड्स। इसमें थैलस के अंदर, ये थैलस है, इसमें क्या होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर से पाए जाएंगे, दैट इज नॉन राइजॉइड्स। और ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं राइजॉइड्स, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों तरह के इसके अंदर होते हैं। में अच्छा, both gametophyte and sporophyte stages are formed। इसे जीवन काल में दोनों गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स स्टेज पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट्स मीन्स गैमेट प्रोड्यूसर, मीन्स दैट इज स्पोर प्रोड्यूसर, यानी दोनों स्टेज इसमें पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट्स भी। The plant bodies haploid
The black body is haploids, and that is gametophyte. Gametophyte, it produces male sex organ and female sex organ. Male sex organ is called antheridium, and while the female sex organ is called archegonium. So these are the plant bodies. Haploid means having single set of chromosome, that is gametophytes, and they produce male sex organ, which is known as antheridium, and the female sex organ, which is called archegonium. Antheridium produces antherozoids, which is the male gamete, while the archegonium produces egg. This is the female gametes. So in this way, gametophytes produces both antherozoids and gametes. So antheridium and archegonium respectively. यानी male gametophytes से male gametes और female gametes दोनों उत्पन्न होते हैं. Now suppose this is the antheridium and this is archegonium containing egg. Now after the antheridium, this is antherozoids. By flagellate antherozoid, it liberates from the antheridium. ये antheridium से मुक्त होता है, मान लो फट गया और ये यहाँ से मुक्त हो गया. वो क्या है? It will requires water medium. It will need water medium to move. इसे पानी के माध्यम की आवश्यकता है जिससे ये मूव करके it will move to that and fertilize with egg. Means antherozoid plus egg fertilize and forms zygote. तो एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड्स मुक्त होगा और मुक्त होने के बाद ये पानी के माध्यम से स्विम करते हुए हम जाए. इट विल गो टू द आर्किगोनियम. आर्किगोनियम हम जाए एंड वेयर इट फ्यूजेज विथ एग. ये आर्किगोनियम में जाएगा जहां एक के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा. जाइगोट हम not go under meiosis quick. Zygote does not go under meiosis cell division. That zygote जो है इस पे क्विक meiosis cell division में नहीं जाता है. यानी this is haploid, this is haploid, and this is 2n diploid. So, but it develops into
develops into स्पोरोफाइट, लेकिन ये जाइगोट क्या जाता है समझे, इट मीन्स जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट्स. It is a diploid plant and sporophyte is attached with gametophyte for its food. चूंकि स्पोरोफाइट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट्स में होता है, और ऑर्गेन इसलिए वह स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट पे अटैच्ड होता है, यानी ये गैमेटोफाइट है तो इसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच्ड होगा, समझे, ताकि वहां से उसको भोजन मिल सके फॉर इट्स नरिशमेंट, फॉर इट्स फूड, समझे. नाउ द स्पोरोफाइट्स and then it undergoes meiosis, cell division to form haploid spores. अब इसमें क्या होगा, ये meiosis सेल डिवीजन में क्या बनाएगा, haploid spore which develops into gametophytes, जो गैमेटोफाइट्स में डेवलप कर जाता है, दैट इज द लाइफ सेल्स. सो देयर इज बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इज फाउंड, बट हैप्लॉइड स्टेज इज मोर प्रोमिनेंट एंड डिप्लॉइड स्टेज फॉर but the diploid stage is only for a short period. चूंकि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही स्टेज पाए जाते हैं, लेकिन डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए होता है, मुख्यतः हैप्लॉइड स्टेज ही होता है, समझे. नाउ द इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. It has no any main important economic importance, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें it's used as food for some animals, birds. स्फैग्नम होता है जो फ्यूल्स में भी यूज होता है, कुछ इसकी जातियां ऐसी है जो, नॉट ऑल बट कुछ जातियां ऐसी है जो एज ए फ्यूल यूज होती है, समझे. चूंकि एक चीज है, ब्रायोफाइट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इट कंटेन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो यूज्ड इन पैकेजिंग. तो इसलिए इसका यूज पैकेजिंग में होता है, और स्पेशली मेनली इन फ्लावर, मेनली फूल के पैकेजिंग में होता है ताकि फूल नमी रहे, समझे. और एग्जाम्पल इस इट इज क्लासिफाइड इनटू liverworts and moss, about which we will discuss in the next video.